Hi guys, welcome to Insight SSB YouTube channel. I'm Vishali and I'm here with AFCAT 1 2021 Current Affairs series for you. Now, as I've been getting a lot of requests in my serious current affairs that ma'am, as you started your AFCAT current affairs series, please begin it again because last time we got a lot of questions from the static areas that you covered along with the current affairs. So guys, first thing that we need to do is we need to plan. That is, if we get 25 questions in GS, we have to make one thing sure that we need to get at least 18 questions right. This should be our agenda. You cannot get everything right in GS, right? Even if you are scoring 18 questions right, very good, you will easily crack exam with 200 plus marks. Now, coming to the main agenda, that is, if we talk about static and we talk about current affairs. There is always one thing that current affairs only hold 2 to 3 questions, लेकिन जो स्टैटिक आता है वो काफ़ी बेस्ड आता है ऑन करंट अफेयर्स. फॉर एग्जाम्पल, इस बार अगर बुकर प्राइज दिया गया है तो पहले किसे दिया गया है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज स्टैटिक टाइप ऑफ क्वेश्चन. ओके, देन इफ यू टॉक अबाउट दैट दिस टाइम और नेक्स्ट टाइम इफ देयर इज एनी वर्ल्ड कप दैट इज कमिंग अप, so who has won it before, or if India has won it, then how many times it has won it. So what we need to do is that we need to cover a current affairs along with static, and this is the way we studied last time also, and this is going to the way we are going to study this time also. Okay, now before moving further, I would like to tell you one thing, that you guys have this tendency in your head that we need to cover history, polity, geography, economics, etc. for AFCAT. Guys, you are living in a myth. When we talk about AFCAT एग्जाम, साइंस के मुश्किल से कभी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, नहीं पूछे जाते, और उसके लिए आप पूरी ल्यूसेंट पढ़ जाते हो. यू गो एंड स्टडी एवरी एनसीईआरटी, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, विल नॉट गिव यू मार्क्स. सेकेंड थिंग इज, हिस्ट्री प्रोमिनेंटली पूछी जाती है. हिस्ट्री में हर एक चीज़ नहीं पूछी जाती, सीडीएस एग्जाम नहीं है, बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं, सो यू शुड नो व्हाट इज टू बी रेड. ठीक है. थर्ड थिंग इज, ज्योग्राफी में आपसे क्लाइमेटोलॉजी के क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा. ठीक है, आपसे सिर्फ फिजिकल फीचर्स, एटलस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, एंड दैट टू वेरी स्पेसिफिक. ओके, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर स्टडिंग राइटली एट दिस पॉइंट इन टाइम. आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं AFCAT को सीडीएस की तरीके से पढ़ के. ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं मिसलेनियस सेक्शन से. मिसलेनियस सेक्शन एटलीस्ट आपके 10 क्वेश्चन कवर करता है. आपका करंट अफेयर 2 से 3 क्वेश्चन कवर करता है, और उसके अलावा हिस्ट्री ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चन आपके कवर करता है. 5 to 6 क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं. Remaining come from here and there, and you don't need to focus on all of it once you get these marks. So try and understand that there should be a proper manner by which you'll be preparing. In case you are unable to find out that which areas are to be read, you can go and check out what all topics we have added on in our course, that is of AFCAT 1 2021 GS course, and in this we are guaranteeing you 50 plus marks. In case you want exact study material and you don't want anything less and anything more, I'll just suggest you one thing. Please keep a trust on us and just cover these areas. You will cover these areas, and I assure you 18 questions are done. You will get it clearly from this particular course. Even last time the students of our course got exact questions in GS, and if you want to go and check it on Instagram. You will find it on reviews that our student has given us, and we have added it up right away on Instagram. Okay, now moving forward with the most important part, that is questions, and we'll be dealing with current affairs along with the static part. Okay, the first question is, which team won IPL 2020 trophy? So if we talk about IPL 2020 trophy, the first thing that we need to know is that IPL start कब हुए थे. So IPL का जो first season था, that started in 2008, and it is a 2020 cricket competition. ठीक है, तो क्या कौन सा cricket competition है ये? एक 2020 cricket competition है. The second thing that we need to know is कि अभी जो IPL था वो कब से कब तक हुआ था. It started near about in your September and ended up in November. When we talk about the venue कि कहाँ पर हुआ था IPL, it was in UAE. ठीक है. Talking about the winners, so winners जो रहे हैं इस बार, that is मुंबई इंडियंस, and मुंबई इंडियंस ने विनर का टाइटल 5th टाइम जीता है. मतलब 5th टाइम they have become the winners, and they have been the winners for the maximum number of time when it comes to IPL. Talking about the runner up, it was दिल्ली कैपिटल्स दिस टाइम. तो इस बार मुंबई इंडियंस एंड दिल्ली कैपिटल्स के बीच में लास्ट मैच हुआ था, एंड फाइनली जो जीते हैं दैट इज मुंबई इंडियंस. टॉकिंग अबाउट द मोस्ट रन्स, दैट इज ऑरेंज कैप, तो वो मिली है KL राहुल को. ये है किंग्स 11 पंजाब से. एंड मोस्ट विकेट्स जो मिली है दैट इज पर्पल कैप. ठीक है, ध्यान रखना, दे कैन इवन आस्क दैट हु गॉट पर्पल कैप.
in IPL. So you should know that it is Kagiso Rabada and he's from Delhi Capitals. Most valuable player का किसको मिला है? Jofra Archer, he's from Rajasthan Royals. Okay, so ये सारी important information है IPL के बारे में, you need to remember. So what is the answer? Answer for the same is Mumbai Indians. Now coming to the next question, Douglas Stewart has won the Booker Prize 2020 for which novel? So Booker Prize एक बहुत important topic है when it comes to AFCAT, direct indirect काफ़ी बार question पूछे जाते हैं. So the answer for the same is Shaggy Ben. So Shaggy Ben has won the this time Booker Prize and it has been written by Douglas Stewart. When we talk about this novel, it is about a boy who is almost in 1980s. Okay, so 1980s की कोई story है जिसमें there is a boy and he is in Glasgow के अंदर है वो and he's trying to support his mother. So it's somewhat related to that. Now when we talk about Booker Prize, Indians who won Booker Prize is a very very important thing. The first one who has won is V.S. Naipaul. So अगर कोई पूछता है that who got Booker Prize first time to India, so the answer for the same will be V.S. Naipaul and he has won it for In a Free State. Okay, so ये सारी books हैं. पता है इसमें किस तरीके से question आता है? The question will be very very direct that the God of Small Things has been written by whom? And The Inheritance of Loss has been written by whom? The White Tiger has been written by whom? So you should know about it. Okay, so first कौन रहे हैं? V.S. Naipaul. And if we talk about Midnight Children, Salman Rushdie ने लिखी है. The God of Small Things is written by Arundhati Roy. The Inheritance of Loss has been written by Kiran Desai and The White Tiger has been written by Aravind Adiga. So ये हमारी Arundhati Roy हैं. He is Salman Rushdie. Okay, and he is Aravind Adiga. Talking about this, she is Kiran Desai and this is our V.S. Naipaul who has been the first person to get Booker Prize to the country. Also, we should know the years. It has been provided right away. तो आप इसको please अच्छे से कर लेना. So the next question is, which Indian program has won 48th International Emmy Award 2020? So whenever we talk about awards specifically like Grammy Award, Emmy Award, any international award, they are very important. Along with this, we need to know that if any Indian documentary, Indian movie or Indian series has kind of achieved any rank in such international award, so it is very very important. The same way Delhi Crime is. Okay, so 48th International Emmy Award मिला है Delhi Crime को. This is basically on Nirbhaya Kand. If you know Nirbhaya Kand जो दिल्ली में हुआ था, so उसके regarding ये एक kind of, you can say, documentary. वैसे it's a series, but it's kind of a documentary which is giving in-depth analysis about law and order and how the crime have been proceeding in India. So that is the case here and it is very important. So आप इसे याद रखेंगे that 48th International Emmy Award किसे मिला है? Delhi Crime को मिला है. Now coming to the next question, that is, which cricket player has emerged to be the fastest batsman to reach 22,000 international run? So talking about this, the first thing that we need to remember is that till now Sachin Tendulkar was holding this title of being the fastest batsman who has achieved 22,000 international runs. Okay. Now when we talk about Virat Kohli, so he has now become the quickest batsman, leaving Sachin Tendulkar behind. तो वो बन गए अब quickest batsman to complete 22,000 international runs and he has done it in 462nd innings में उन्होंने ये achieve कर लिया है. So the answer for the same will be C, Virat Kohli. अगर कोई भी पूछता है that who is a cricket player who has achieved 22,000 runs, international runs, and who is the fastest batsman to do that, the answer will be C, Virat Kohli. Coming to the next question, who became the first cricketer to score consecutive centuries in IPL history? तो ये question directly IPL से related है, अभी जो UAE में हुआ था, right? We discussed it as our first question if you remember. So the answer for the same is Shikhar Dhawan. He is our batsman and he became the first cricketer in the history of IPL who has scored बैक टू बैक सेंचुरीज. तो आईपीएल की हिस्ट्री में ये काफी बड़ी अचीवमेंट है, इसलिए एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. Now coming to the next question, the first Indian racer who wins the Formula 2 Grand Prix. Now this Grand Prix had been Sakhir Grand Prix, okay, and it was at Bahrain, okay, and it is the first person from India who has won this Formula 2 Grand Prix, and hence it is very very important because first who is who kind of question are famous of AFCAT, and the second thing is that it is also related to sports, इसलिए काफ़ी important question हो जाता है. The answer for the same is C, that is Jehan Daruwala.
Now moving on to the next one, as you know that AFCAT का favorite question है, if any women officer have been inducted in any of the things that she was not doing initially, okay, या फिर कुछ उन्होंने extraordinary किया है, तो ये question पूछे जाते हैं Indian Air Force के एग्जाम में. So when we talk about the first women officers Indian Navy की जिन्हें अडॉप्ट किया जा रहा है in Navy warship, तो उनका क्या नाम है? द आंसर फॉर द सेम इज लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी एंड सब लेफ्टिनेंट ऋति सिंह. एज यू नो कि नेवी वॉरशिप जो है ये क्या है, दीज आर पार्ट ऑफ कॉम्बैट रोल्स व्हेन इट कम्स टू नेवी. तो कॉम्बैट रोल के अंदर अभी भी नेवी के अंदर विमेन वर नॉट अलाउड, लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट दे आर अलाउड फॉर बीइंग इनटू कॉम्बैट रोल्स. अगर आर्मी की बात करते हैं अभी भी कॉम्बैट रोल में विमेन आर नॉट देयर, ठीक है. इन्फेंट्री एज यू नो जितनी भी फाइटिंग फोर्सेज है उसके अंदर अलाउड नहीं है. लेकिन अगर हम एयरफोर्स की बात करते हैं, सो विमेन हैव ऑलरेडी बीन इंडक्टेड इनटू द फाइटर्स एंड हेंस उसमें कॉम्बैट रोल में एडेड अप हैं, ठीक है. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज टेक नोट ऑफ दिस. Now I have few questions from you, and the question is that women officers from Indian Air Force to get Nari Shakti Puraskar. इन तीनों ऑफिसर्स के आप नाम बताएं अभी. एंड द सेकेंड वन इज दैट फर्स्ट विमेन फाइटर पायलट कौन है. सो अगर हम नारी शक्ति पुरस्कार की बात करते हैं, सो द आंसर फॉर द सेम इज मोहना जितरवाल. ओके, द सेकेंड वन इज अवनी चतुर्वेदी एंड द थर्ड वन इज भावना कांत. ठीक है, अब मैं आपसे एक बात और पूछूंगी, फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट कौन है. आपको तीनों ऑप्शन अगर दिए जाते हैं मोहना, अवनी एंड भावना, सो ऑफ कोर्स यू नो दैट इनमें से आंसर होगा. लेकिन अगर तीनों के नाम एडेड अप हैं इन योर ऑप्शंस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में इनके नाम है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इनमें से कौन है. सो अगर हम फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट की बात करते हैं तो किसने सबसे पहले अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करी है. ट्रेनिंग कंप्लीट करना मतलब दे हैव गॉट कंप्लीटली ऑपरेशनल. सो एज यू नो कि आफ्टर दे पास आउट फ्रॉम AFA, दैट इज योर एयरफोर्स अकेडमी, देन दे हैव टू गो फॉर फर्दर ट्रेनिंग इन द सेंस कि उन्हें हॉक्स वगैरह में जाना पड़ता है. वंस दे डू द ट्रेनिंग इन हॉक्स, देन दे गो फॉर अदर प्लेन्स लाइक मिराज और सुखोईज. And then once they complete training, once they are fully operational, that is the time they are considered to be the fighter pilots, right? So first कौन है जिन्होंने अपनी पूरी ट्रेनिंग इन तीनों में से सबसे पहले कंप्लीट करी है. The answer for the same is भावना कांत. ठीक है. Now coming to the next question, who became the first bowler to claim 100 wickets in the women Big Bash League? So when we talk about Big Bash League, तो first women bowler कौन सी हैं जिन्होंने 100 wickets claim करी हैं. So if we talk about this match, ये मैच खेला जा रहा था by the same team against Melbourne Stars, और सिडनी में ये गेम चल रहा था. ठीक है. And the figures that this lady got was 2 for 38 in just 4 overs. And the name of this lady is Molly Strano. Whoever watches cricket matches, तो उन्हें पता ही होगा that she is an Australian player. Okay. अब first of course your answer is Molly Strano. If I ask that who is the second highest wicket taker after Molly Strano, the answer for the same is Jess Jonassen. Okay. Now coming to the next question, who has won gold medal in 52 kg men's category in Boxing World Cup? पहली बात हम करते हैं कि बॉक्सिंग वर्ल्ड कप जो 2020 में हुआ है, वेयर वॉज इट हेल्ड. सो द आंसर फॉर द सेम इज कॉलन, जर्मनी. ठीक है, यहाँ पर आपका बॉक्सिंग वर्ल्ड कप चल रहा था. एंड अगर हम 52 kg मेंस कैटेगरी की बात करते हैं, गोल्ड मेडल किसने जीता है, द आंसर फॉर द सेम इज अमित पंघाल. ठीक है. द सेकेंड क्वेश्चन रिलेटेड टू द सेम इज दैट बॉक्सिंग वर्ल्ड कप के अंदर कितने गोल्ड मेडल इंडिया ने जीते हैं. सो एनीबडी आउट ऑफ यू नो द आंसर फॉर द सेम. ओके, द आंसर फॉर द सेम इज ए, दैट इज 3. 3 मेडल जीते हैं इंडिया ने जो कि गोल्ड है. अब एक बार हम सारे मेडल्स भी देख लेते हैं दैट हु ऑल हैव वन, बिकॉज इन केस ऐसे आ जाता है दैट गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है, यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट द सेम. सो गोल्ड मेडल हैज बीन वन बाय अमित पंघाल, मनीषा मौन एंड सिमरनजीत कौर. इनकी कैटेगरी भी देख लेना, 52 कैटेगरी में, 57 kg कैटेगरी एंड 60 kg कैटेगरी. सिल्वर की अगर हम बात करते हैं तो साक्षी चौधरी एंड सतीश कुमार ने जीता है 57 कैटेगरी एंड 91 कैटेगरी ईच. ओके. एंड ब्रॉन्ज उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टिल जस्ट गो थ्रू द नेम इन केस आ जाए तो यू शुड हैव एन आइडिया. द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज गोल्ड एंड इसमें ओनली वन मेल इज देयर, दैट इज अमित पंघाल. इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको इसको अलग क्वेश्चन के फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया है.
और इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन ज़्यादा आने का चांस है CDS एग्जाम के अंदर, बिकॉज वो डायरेक्टली अगर पूछना चाहेंगे तो इस तरीके से पूछ लेंगे कि इनमें से किसी का भी नाम दे देंगे और बोलेंगे दैट दिस पर्सन इज एसोसिएटेड विद विच गेम, जैसे बॉक्सिंग एसोसिएटेड है या फिर आर्चरी से एसोसिएटेड है. सो शुड हैव एन आइडिया कि कौन से गेम से एसोसिएटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 बॉक्सिंग. लेकिन ये डायरेक्टली मेडल फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है इन AFCAT एग्जामिनेशन. नाउ कमिंग टू फोर्ब्स 2020, तो अभी रिसेंटली एक लिस्ट लॉन्च करी है दैट इज वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन, and in this list there are certain names of Indians and we need to know that. So this is the list and I have taken out the most important names, so you need to go through all of these. Talking about the most important ones amongst them is the 41st, that is Nirmala Sitharaman, and she is Indian Finance Minister, if you all know. Abhi recently budget session bhi chal raha hai, so you must have an idea because she has been delivering a lot of things. So she is Miss Nirmala Sitharaman and she is on 41st rank. Talking about Miss Kamala Harris, she is US Vice President abhi jo recently elect hui hain, and hence it is also very very important. Else than this we can see 2 other names of Indians, that is Miss Roshni Nadar Malhotra and Miss Kiran Majumdar Shaw. So you should also have an idea about these. Moving to the next thing, that is Time Magazine's Person of the Year. So Person of the Year award जाता है Joe Biden and Kamala Harris. Joe Biden जो है, he is the newly elected President of United States of America, and Kamala Harris, she is the newly elected Vice President of United States of America. So with this we end up the part 1 of AFCAT current affairs series, and I hope you really liked it. Please make sure that you share it with your friends and also hit the like button, and make sure that you comment the questions that I have asked you throughout the video.